So today we are going to study synthesis of amino acids. Now we know that ammonia has been formed via reduction of nitrogen and nitrates. So what happens if ammonia starts accumulating in the cells? It is toxic. So now this ammonia has to be used up. So this is used up in the formation of amino acids. And this process, it mostly occurs in the roots and the leaves because these are the sites of nitrate reduction also. So by many methods we can get the formation of amino acids, or we can say that we can use up ammonia. So the first, it is reductive amination. So as the name suggests, it is reductive amination. Reducing power is also needed, which may be NADPH2 or NADH2, and amination of the organic acid takes place. Now the organic acids, they are produced in the Krebs cycle, intermediates of the Krebs cycle. The first one to take up ammonia, that is alpha ketoglutaric acid, again an intermediate of the Krebs cycle. But when it gets converted into glutamic acid, that is an amino acid, there comes one intermediate also, that is alpha aminoglutaric acid. So if we see this is alpha ketoglutaric acid, what happens is that amino group, it gets added over here. So it gets converted into COOH, CH, and CH2, CH2, COOH. This becomes the glutamic acid, that is amino group. It gets incorporated into the organic acid. And this takes place with the help of enzyme dehydrogenase. Here it is glutamic dehydrogenase, zinc ions are needed, and the conversion of organic acid into amino acid, that is the glutamic acid. Then the second organic acid which can take up ammonia directly, that is oxaloacetic acid. Again NADPH2 is needed, amino group comes from this ammonia, dehydrogenase enzyme is needed, and it gets converted into aspartic acid. So oxaloacetic acid gets converted into aspartic acid. Then phosphoenol pyruvic acid, it also takes up ammonia, reducing power needed, dehydrogenase enzyme needed, it gets converted into alanine. So this is how these organic acids, they take up ammonia and get converted into the amino acids. Then the second method, it is catalytic amidation. That is ammonia, it is taken up by the catalytic amounts of the amino acids. Amino acids एक और अमोनिया जो है वो उसके साथ रिएक्ट करके अमाइनो ग्रुप ले लेते हैं, and then they get converted into amides which have two amino groups. So that is why it is catalytic amidation. So for example, we know this is glutamate या glutamic acid इसे हम कहते हैं, amino acid. It takes up another ammonia, ATP is needed for this process, glutamine synthetase enzyme is needed, magnesium ions, so it gets converted into glutamine. Now glutamic acid या glutamate, it is amino acid. When we write glutamine, it means it is an amide. Now instead of having a single amino group, now there are two amino groups. So it has got converted, amino acid has got converted into amide. And now what happens? Now these amides, they have two amino groups. And how they can release their one amino group and get converted into amino acid back? For example, this is the amide, glutamine. It has two amino groups. It will react with alpha ketoglutarate. अब अल्फा कीटोग्लूटारेट को ये क्या करेंगे, अपना अमाइनो ग्रुप इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, एक जो एक्स्ट्रा है, बिकॉज एमाइड में दो हैं तो एक इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम, एंड व्हाट वी विल गेट इज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड, क्योंकि अल्फा कीटोग्लूटारेट के पास एक अमाइनो ग्रुप आ गया, वो भी ग्लूटामिक एसिड बन गया, और इसमें ग्लूटामिन में से एक अमाइनो ग्रुप निकल गया तो वो भी ग्लूटामिक एसिड में कन्वर्ट हो गया. So these amides, they get used up in converting organic acids into amino acids. तो अपना एक एक्स्ट्रा अमाइनो ग्रुप वो organic acids को ट्रांसफ़र कर देती. Then the third method by which amino acids are formed, that is transamination. Now what is transamination? It is that amino acid, it gets converted into you can say organic acid. अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप किसी ऑर्गेनिक एसिड को दे देता है
उसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर हो जाता है वो, और खुद जो अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप दे देता है वो आप कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक एसिड में. सो एन अमाइनो एसिड इट इज़ फॉर्म्ड एट द कॉस्ट ऑफ deamination of some amino acid. For example, this is the glutamic acid. It is an amino acid. It will react with oxaloacetic acid and will transfer its amino group to oxaloacetic acid. अपना amino group ये oxaloacetic acid को दे देगा, तो oxaloacetic acid aspartic acid एक amino acid बन जाएगा. और इसने क्योंकि अपना अमाइनो ग्रुप लूज कर दिया तो ये वापस किस में कन्वर्ट हो गया, into alpha ketoglutarate acid. That is amination of some organic acid at the cost of deamination of some amino acid. अमाइनो एसिड को ये अपना अमाइनो ग्रुप जो है वो किसी ऑर्गेनिक एसिड को दे देगा, वो ऑर्गेनिक एसिड अमाइनो एसिड में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा और ये खुद ऑर्गेनिक एसिड में. This reaction takes place in the presence of enzyme transaminase. In this case, it is glutamic aspartic transaminase. Also, we can see another example is of glutamic acid. It will give its amino group to pyruvic acid. अपना amino group इधर shift कर देगा in the presence of glutamic alanine transaminase. तो ये खुद किस में convert हो गया, into alpha ketoglutarate acid. और पायरुविक एसिड ने एक अमाइनो ग्रुप उसके साथ आ गया तो वो कन्वर्ट हो गया इनटू एलानिन. एलानिन इट इज़ एन अमाइनो एसिड. सो वी कैन सम अप दिस रिएक्शन लाइक सपोज इट इज़ R1CHNH2COOH. दिस इज सम अमाइनो एसिड और ये कोई ऑर्गेनिक एसिड है R2COCOOH. इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसएमिनेज उसमें ट्रांसफ़र किसकी होगी, अमाइनो ग्रुप इधर से इधर शिफ्ट हो जाएगा. अब ये जो R1COCOH बन गया ऑर्गेनिक एसिड और जो दूसरा ऑर्गेनिक एसिड था उसमें अमाइनो ग्रुप लग गया और वो कन्वर्ट हो गया इनटू द अमाइनो एसिड. ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी अमाइनो एसिड था और ये ऑर्गेनिक एसिड था. ये अमाइनो से ऑर्गेनिक बन गया, ये ऑर्गेनिक एसिड से अमाइनो एसिड बन गया. इस लेक्चर में हमने सिर्फ 3 मेथड्स जो हैं वो स्टडी किए हैं कि कैसे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो बनते हैं. द फर्स्ट इट वाज रिडक्टिव एमिनेशन, सेकंड फॉर्मेशन ऑफ एमाइड्स दैट इज कैटालिटिक एमाइडेशन एंड दिस इज द थर्ड वन दैट इज ट्रांस एमिनेशन. रिडक्टिव एमिनेशन में क्या पढ़ा था हमने कि जो ऑर्गेनिक एसिड है वो अमाइनो ग्रुप ले लेते हैं और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. कैटालिटिक एमाइडेशन में एमाइड्स बनती हैं, दैट इज़ द अमाइनो एसिड इट टेक्स अप अनदर यू कैन से अमाइनो ग्रुप. 2 अमाइनो ग्रुप्स हो गए, एमाइड्स बन गई. अब तीसरे वाले में क्या है कि कोई अमाइनो एसिड जो है वो क्या करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसएमिनेज एंजाइम अपना अमाइनो ग्रुप किसी और ऑर्गेनिक एसिड को दे देता है, खुद ऑर्गेनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ऑर्गेनिक एसिड को मिलता है अमाइनो ग्रुप वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. बाकी जो मेथड्स हैं वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.